So, good morning, everyone. So, today we are going to start with a new topic, quadratic equation. Now, this chapter is especially the interesting part of this video in the coming videos about quadratic equation is ये जो videos बना रहा हूँ ये CBSE and ICSE boards के लिए together you can join these videos because uh, the common part I'll be taking over here and of course uncommon part जो है ICSE को अलग से कुछ पढ़ाना पड़ेगा that I'll be taking the separate videos. So today's part is a common part for CBSE and ICSE. Of course, I'll be covering all the concepts, but with the help of PYQs. तो आपके लिए concepts भी आपके पास रहेंगे और आपको एक अंदाजा भी आएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है. Now, today we are going to start with the basic definition of एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ for the basic definitions as well as solution set of the quadratic equations. Okay, let me share my screen with you. So I hope you can see the screen now, right? So today, as I said, हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, बस definition पहले समझ के ले रहे हैं. Definition दो types के definitions हम देख सकते हैं. Number one, एक जो theoretical definition है, what is a quadratic equation? A quadratic equation is an equation of degree 2 in one variable. Degree 2 in one variable, that is a quadratic equation. Equated to 0 of course is called as a quadratic equation. Okay, but इससे कुछ हमारे समझ के बाहर हो सकता है. There is a possibility that we may not understand this. So again I repeat, the definition is an equation of degree 2. Degree 2 मतलब highest power 2 होगा in one variable which is equal to 0. So the simple definition for quadratic equation is this: any equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where this is very important. It is not only important that ये equation है where a, b, c belongs to, मतलब वो real numbers है, and most important thing is a is not equal to 0, because अगर a इसको मैं निकाल दूं, a को 0 बना दूं, तो मेरे पास बचेगा bx plus c which is a linear equation. It doesn't remain as a quadratic equation. So for quadratic equation to be there, b and c can be 0. b 0 हो सकता है, उसको हक है 0 होने का, c भी 0 हो सकता है, but a cannot be equal to 0, right? And a, b, c are very important thing, they are real numbers. Okay, now what is a solution set? Solution set क्या होता है? Solution set मतलब the something, the value of x which will satisfy the equation, the value of x that will satisfy the equation. So let's say for example, अगर मैं इसको basically अगर मैं इतना ही लिखूँ ax square plus bx plus c इतना ही लिखूँ, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है. ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है. तो अगर ये मान लो पॉलिनोमियल है और इक्वल टू 0 बना दूं, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और x का ऐसा एक वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है. सो इफ x इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन, इसको अलग अलग नाम है, सॉल्यूशन, या फिर इधर इसको रूट्स कहते हैं. बेसिकली इसको रूट्स कहते हैं. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कहते हैं, और आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में देखा होगा इसको जीरो भी कहते हैं. इज अ जीरो और सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन. दैट मीन्स a इंटू अल्फा स्क्वायर, एक्स के बदले अल्फा लिख दिया, b इंटू अल्फा, x के बदले अल्फा लिख दिया, प्लस c. दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फाई द इक्वेशन? सिंपल, अगर वो x के बदले हम अल्फा लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड, इक्वल हो जाता है. इन दिस केस स्पेसिफिकली इन जनरल पॉलिनोमियल्स में इसको जीरो कहते हैं, इन जनरल इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, और स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग इसको रूट्स कहते हैं. और एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स. ये तो बाद में की बात है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द एग्जाम्स. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आज तक आईसीएसई में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, फिर सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ चुके हैं इसके पहले भी. right? So let us try to understand. He says that if x is equal to 3 is one root of the quadratic equation,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. एज आई टोल्ड अर्लियर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इफ इट इज अ रूट, दैट मीन्स p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0. p ऑफ अल्फा मतलब क्या करना है, हमको x को रिप्लेस करना है अल्फा से, दैट्स इट. तो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करना है, 3 से. तो अगर मैं रिप्लेस करूँ, मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0. इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, अगर ये रूट है, I am writing this completely because in the exam you are supposed to write complete statement. Minus 2k into 3 minus 6 is equal to 0. Now 3 का square हो जाता है 9 minus 2 into 3, 2 multiplied by 3 is 6k minus 6 is equal to 0. Now minus 6k plus 3 is equal to 0 and minus 6k is equal to minus 3 and k का वैल्यू बन जाता है minus 3 upon minus 6 which is equal to 1 upon 2. Right? That's it, and this will give you 2 marks. So यहाँ पे फिर से देखो, CBSE this was asked in 2 years, to 2015 and 2018. So here equation of given equation is 3x square plus 2k into x minus 3 is equal to 0. ओके अगर मैं इसको कहते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस हाफ इज द रूट या इज अ सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन कह रहे हैं, दैट मीन्स x को किससे रिप्लेस करना है, -1/2 से. सो यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर आएगा प्लस 2k इंटू अगेन -1/2 -3 इज इक्वल टू 0. नाउ वंस अगेन 3 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 है, 2 and 2 गेट्स कैंसिल. लकीली यहाँ पे माइनस k -3 इज इक्वल टू 0. k इंटू -1 हो रहा है, देखो k एंड -1, हेंस इट इज -k. ऑलराइट, सो अगर मैं 3/4 -3 यहाँ लिखूँ तो दैट विल बी इक्वल टू k. दैट मीन्स k का जो वैल्यू है दैट विल बी 3 - 12. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 3 - 1 है, एंड डिवाइड बाय 4, हेंस k का वैल्यू बनता है -9/4. दैट्स इट, बिकॉज अपने को सिर्फ k का वैल्यू चाहिए. राइट, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ICSE में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. सिमिलर क्वेश्चन है, बट देयर इज वन एडिशनल पार्ट, हेंस इट इज देयर फॉर 3 मार्क्स फॉर देम. राइट, सो देखते हैं क्या करता है. मैं एक पार्ट आज सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज सी द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है अपने को, -k into x plus 6 is equal to 0. So if x is equal to 3 is a solution. अगर x is equal to 3 solution है तो k plus 2 और 3 का स्क्वायर आएगा, बिकॉज x को रिप्लेस करेंगे 3 से, माइनस k into 3 plus 6 is equal to 0. Now 9 3 का स्क्वायर इंटू k प्लस 2 माइनस 3k प्लस 6. इसके आगे पूरा अलजेब्रा है, पूरा प्योर अलजेब्रा है, नॉर्मल अलजेब्रा इक्वेशन सॉल्व करना है. तो अगर यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि मुझे नहीं समझा, बिकॉज दिस इज अ सिंपल अलजेब्रा एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल इज अबाउट द मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स जिसको आप बचपन से कहते आ रहे हो, वो होने की चांसेस है. सो 9k minus 3k is 6k and 18 plus 6 is 24 is equal to 0. And now 6k is equal to minus 24. And then k का वैल्यू होगा -24 upon 6. And hence k का वैल्यू है -4. Alright. Now there is one more question. Thus find the other root of the equation that we will be discussing in the later part. Okay, not now. बिकॉज रूट्स कैसे निकालने हम अगले वाले एक्सरसाइज, अगले वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में. सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस वाज CBSE 2022 में पूछा गया था. दिस इज अ रीसेंट क्वेश्चन.
if x is equal to -2 is a common solution of quadratic equation, मतलब इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, then find the value of a square b. So let me take first equation as ax square plus x minus 3a. तो यहाँ पे if x is equal to -2 is a root, अगर ऐसी बात है, that means a into -2 का स्क्वायर plus -2 minus 3a is equal to 0. So this is 4a minus 2 and minus 3a is equal to 0. 4a minus 3a will be a, 4a minus 3a, 4a minus 3a will be a, and -2 को राइट हैंड साइड पे लेके आओ तो a की वैल्यू मेरी बनी 2. अब कंसिडर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दूसरा भी एक इक्वेशन दिया, उसका भी रूट x इज इक्वल टू -2 है, तो दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे भी वो बता रहे सेम रूट है, x इज इक्वल टू -2 इज अ रूट या फिर इज अ सॉल्यूशन, जो भी वर्ड वहां पे यूज किया है वहां पे करना अपने को करना चाहिए. तो यहाँ पे दिस इज -2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस b is equal to 0. Now I get 4 minus 2b plus b is equal to 0. Now remember, minus 2b plus b is minus b, minus 2 plus 1 is minus 1, and I take this 4 on the right hand side, it becomes -4. The value of b becomes 4. Now I have the value of a, I have the value of b. The question is asking simple thing, that is a square b का वैल्यू क्या होना चाहिए. A square is 2 का square multiplied by b is 4. Here 4 into 4, that means मेरा a square b का वैल्यू है 16, right? So that's it for today, because मैंने आज कहा था कि हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं और उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है. So I'll come back to this. First of all, understand the definition. Definition of a quadratic equation is, it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, जहाँ पे a, b and c रियल नंबर होने चाहिए और a को हक नहीं है 0 बनने का, because if a becomes 0 वो एक लीनियर इक्वेशन बनता है, right? What is the root or solution or 0 of the quadratic equation? It is some value of x which satisfy the given equation, then it is called as root or solution or 0 of the quadratic equation. Generally हम लोग यहाँ पे word use करेंगे roots. So that's it for today. In the next class I'm going to discuss about roots कैसे निकालने हैं. अभी तो आज हमको roots दिए हुए थे और फिर कुछ अननोन वैल्यूज पूछे थे. अगर मुझे एक इक्वेशन दिया जाए और रूट्स निकालना है तो कैसे निकालें, तो उसके लिए बेसिकली 3 या 4 मेथड्स है, बट फॉर आईसीएसई उसमें से 2 ही मेथड है और सीबीएसई उसमें से एक ही मेथड है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट कॉमन मेथड which is there, that is the factorization method that is there for CBSE as well as ICSE. See you in the next class. Bye bye till then. If there is any query about anything in maths, then please feel free to connect on this number. आप यहाँ पे WhatsApp भेज सकते हैं and I'll answer your questions. Thank you for now. Bye bye.